and welcome back to another video. This video is requested by one of my viewers. I will elaborate the fundamental of drawing. I think this is really an interesting topic क्योंकि हर कोई इसमें मिस्टेक करते हैं. मैंने खुद भी किया था क्योंकि मैंने भी जब इसे ट्राई किया था तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ की. बट बाद में जैसे जैसे हम लोग फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग को फॉलो करना शुरू करते हैं हमारे बेसिक्स इम्प्रूव होते जाते हैं. सीरियसली इट्स रियली वर्क अ लॉट. आई एम ऑलवेज यूजिंग सम ऑफ दीज मेथड. And yeah, this is the best way of learning methodology of drawing. So yeah, let's get started. ड्राइंग सीखने के लिए वी नीड टू लर्न सम बेसिक टेक्निक्स. नॉर्मली हम पेंसिल को नीचे से पकड़ते हैं पर ड्राइंग के लिए हमें पेंसिल को मिडिल से पकड़ना होता है. प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी सस्ते पेपर का यूज कर सकते हो या फिर आप न्यूज़पेपर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो. पेंसिल को हल्की सी पकड़ बना के हमें लाइन और शेप बनाना है बिना किसी स्केल और इरेजर के हेल्प के. दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज विच इज नेसेसरी फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर हैंड. Practice to draw freehand 2D shape and 3D shape without using scale and eraser. It will help us to improve drawing efficiency and accuracy. Draw freehand 3D object drawing. Take simple object around you and decide a good angle and sketch in that perspective. Any painting can look more realistic when you using light and shadow. Look at the example of a spear. स्पेयर का सबसे लाइटेस्ट साइड उसके ऊपर का है जहाँ लाइट डायरेक्टली पड़ रही है. उसके नीचे सेकेंड शैडो जो मिड डार्क टोन है और कास्ट शैडो जो सबसे ज़्यादा डार्क है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब लाइट सोर्स नीचे होगा तो कास्ट शैडो बड़ा होगा और जब लाइट सोर्स ऊपर होगा तो कास्ट शैडो छोटा होगा.
Live sketching is the most important way to improve your drawing skill. By observing things kept somewhere from a certain angle and being able to draw them on paper as they are. It helps us to visualize things and improve concept because we can draw the object on paper as it is. Also, it develops our observation skill. You can do live sketching of anything by taking picture of different angle. Sketching and drawing are great way to improve your creative skill. I hope this video can teach you something new. If you like this video, then please press the like button and don't forget to subscribe my channel. If you want me to make a new video on a certain topic, then feel free to suggest it in the comment box below. And also share this video as much you can. Thank you for watching.